Very good evening, everyone. So today we are back with the day two, or we can say module two of our skill-based course on MS Excel, that is mastering MS Excel basics to intermediate. So hope I am audible. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Today I will be covering module two. So your module two that comprises of the working with data and formatting. In the previous module, we have studied about various topics that are based on the introduction to MS Excel. So today I'm going a bit faster with the working on MS Excel with my prerequisite that I'm pre and assuming that you understand what are ribbons, what are the platform, what is worksheet, what is workbook, and all the terminologies related to the MS Excel. So in our previous session, we have talked about the ribbon starting from the file till the acrobat. Then we have studied and taken a gist about various toolbars that are quick active toolbars below and above the ribbon. We have taken a small introduction about various tabs, what are its functions. So pre-assuming that we are clear with the interface, now we'll start with the data entering and other processes related to the Excel. So in the today's session, we will be covering data formatting, managing worksheets, and then basic page setup. So I'll start with the data formatting. Uh, Let everyone join. Just I'm waiting for another 10 to 15 seconds last. Around 60% of the students have joined. So I'm expecting everyone to join as soon as possible so that the session goes effectively because we have a huge content, and I'm expecting that if you will be with me, so we'll have an effective session. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. So a strict decorum is expected from you people. Like only if you have any kind of query, you will place your queries in the chat box, or you can WhatsApp me. WhatsApp continuously is running on my system. I'll be taking few of the things. And after this, every session, I'll be taking few of your queries also. And everyone who has sent me the WhatsApp regarding various queries in the last session, I think I have addressed everyone's query personally. So the ultimate aim that we are discussing this particular thing, as we have discussed that day also. So our main aim would be that you should learn the art of having all kinds of analysis and data interpretations based on the MS Excel. So MS Excel is not just like a simple tool. It is like its expansion we have studied in the last class, that the infinite number of calculations can be solved infinite. It has n number of sheets. It has huge columns, large database, which is very effectively changed the way we want. We can do any kind of mathematical calculations, any kind of analysis. So all these things together forms our MS Excel, working on MS Excel. So pre-assuming कि आपको कुछ भी नहीं समझ आया है अभी तक, या फिर pre-assuming that कि you are blank, pre-assuming that you don't even know the basic, we'll go that way. So that was the only intention to have. Just 1 minute. So that is the only intention, that I am expecting that if the attendance and everything is well, so you'll be learning it better. So hope you are with me, and we'll start with the today's session that will go up with the data formatting. So first of all, we'll learn how to enter data into the cells. What are cells in Excel? This basic array of the Excel platform where we input our data to have any kind of calculation or manipulations is known as a cell.
as discussed in our previous class, we have n number of rows starting from 1, 2, 3, and we have columns stated as A, B, C. So this is our worksheet platform. So where is our, yes. So we'll start up with applying fonts, font size, colors, everything related to data formatting, then alignment of the cells, then merging and unmerging the cells, then number formatting, that how different numbers are being formatted in MS Excel, then conditional formatting, highlighting cell-based criteria. This conditional formatting will be taken in the next session. Before that, we'll be studying all kind of data entry procedures, that how different kind of data can be entered, how the formulas are being used. Once you are effectively into the Excel, then we'll go for the condition formatting, because condition formatting it itself has so many different ways to understand and so many different good things that is effectively required. So first we'll go with the entry of the data in MS Excel, how to input the data, how to input a word, how to input a letter, how to input numbers, then how to use basic formulas, then how to manage the worksheet. Then managing worksheet means deleting, renaming, moving worksheets, as we have already discussed this thing in the previous lecture. Then what is the use tabs to navigate between worksheets, then copy pasting data across worksheet, and the page setup. This is also we have studied in our previous first session, but we'll take it into a systematic manner today, that adjusting margins, page orientation, everything in different forms. Then how the print preview can be arranged and set, and setting print areas and print header footers. So we'll start with the basic entry of the data. I'm still expecting that you people should join it before the scheduled time, because I'm continuously adding you people into the group, so that doesn't go that effective. So I'm pre-assuming that if these things go in a positive manner, then only I would be able to take the a number of different topics. So let's start with the Excel directly. I will not wait for much now. Now, as you can see, we have this platform where we have a number of ribbons, we have a number of toolbars, and we have a number of tools based on every application that is applicable in our Excel. Okay. So we'll see every tool one by one, and we'll see how the data can be entered into a Excel. So entering the data into Excel is as simple as we do in any kind of MS Word applications or MS Office or Note whatsoever. So what we do is we try to enter a data in cell 1. Okay, like this is cell A1. A1 means a column and one row. What we do is we just select the cell and we start typing as we normally do. Like for example, I'm writing a simple text, say Gagan Bansal, and then if you press enter, it will go automatically to the next row of the same column. Now, how to adjust the data? Like you can see that cell is small, but the text is big. All you need to do is, there are several ways to do, but simplest way is either you go in between column A and B. I'm just trying to input all the students first. Okay. Then all you need to do is either with the help of mouse, sweep it to the left or the right. Or if you want to go for the direct sizing, just go in between A and B and double click. It will automatically take the size of your cell to the maximum level up to which the characters are been fit. Like for example, instead of this, if I'll start writing here, now you can see that
while we'll observe, we are not able to see the cell size. Cell size is this much. So again, if you double click, it will take the size of the maximum content available in our column. Similarly, if you want to add numbers direct from the keyboard, start typing numbers, it will work. Yes. So you can type any number, and we have different types of number formats that will just see that, as you can observe here. Here it is written general. So one good thing about MS Excel is wherever you go with your help of mouse, it will automatically determine and tell you what exactly you want to do. Like for example, I'm going to a number toolbar where as soon as I'm clicking on the number format, it is showing me that choose the format your cell such as percent, currency, date or time. By default, it is general, but you can change it in any way we want. This we will be doing when we will be performing some calculations. That time, this kind of number formatting is very, very important. Number formatting, it itself says that, say for example, if you want to increase decimal or you want to decrease decimal, whatever you want to do, it do with the help of the interfaces, as we have discussed, like starting with the font. Say for example, we have written Gagan Bansal MS Excel here. Then if you want to change the format, font, just click on the cell. You can take any font, it will change itself. Then size also. Here we have an interface for increasing and decreasing the font size. Yes. Then as we already do, italic, bold, underline. Then if you want to make the border on, select the area with the help of mouse. Choose from the borders. Here by default, it is selecting all borders. But this can also be customized by clicking on the drop border. Here you have, like suppose if there is no border, then you can select it has bottom border. That means जो cell आपने select किया है उसके केवल bottom पे border लग जाए. Then bottom at border at the left, like for example, suppose this is a cell. I'll take an intermediate cell. Suppose this is a cell. You can select as much as you want with the help of mouse. Just all you need to do is click on the cell and start dragging. I will just tell you some effective tricks also just now, that how you can fill the empty cells, how can you fill the cells based on the conditions, that will also be studying. Just before that, this is very easy. Bordering, then left border, right border, no border, all border. So this you can do. Then if you want to fill the cell with the help of color, you can fill the color. Then if you want to change this color of the font, you can change. These are all maximum of you might be knowing it. Like if I want in blue color, whatsoever you want. Yes. Then suppose you have a text. Yes. Say we have different text. We'll use to select. Suppose I have no, what this is what we have. Suppose we have serial number. I'm just making a name, then roll number, then okay. We have number 1. We'll remove all kinds of formats. Okay, suppose I am selecting this much of data and I'm making it in all borders. Okay, now double click here. One good thing is, like you can see that suppose I'm entering number 1 here, 2 here. This is 1 because we have taken different format. Okay, we'll just take a uniform format. These things are same as we do in MS Word.
So entering the data is very easy. We do directly with the keywords. Now I'll show you how to drag the data and get the uniformity. Okay. Are you getting till now what I'm? Then we'll start with dragging the data. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So very important. If you want, you can note down also. We'll start with the very important topic, that is dragging of the data in MS Excel. Suppose you have, there are various ways to get a systematic data in MS Excel. Suppose you want to write a serial number here. Yes. Okay. So you'll not do like you type one, then enter, then two, then enter. There are various ways to have the continuous data. Like one way is you select, you just give the two entries in such a manner that these two shows the series. What this two series shows that first we have a number one, then we have a number two. And if we'll drag this, what will happen is it will give a numbers with the increment of one. Yes, this is one way of doing. Understood? Have you got this? I'm just making it at the center. One thing, this is the easiest way, that you select any two. Yes, I have selected one and two. Then I have gone through, this is, you can say the square. Can you observe this? A square pointer. When you'll make your mouse reach that square pointer, जैसे ही आप इसके पास लेके जाएंगे and you'll start dragging, it will give you the continuous number. Now suppose, for example, instead of this, I'm just inserting one row. Instead of this, I want that first number is one, another is two, third is three, and fourth is four. And I'm selecting all these four and I'm dragging it downwards. What will happen? Can anyone guess? What will happen if I drag the four numbers together? सर वो रिपीट हो जाएगी 1 2 3 4 1 2 3 4. Yes. So if you drag the four numbers together, it will give you the continuation. But if suppose if you want that it should be like 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. So what you will do is you'll drag along with the control key. You'll press the control key on your system. If you want to try, you can try it once. That if you want that the similar kind of number should repeat for the entire columns, because by default, if you scroll it, it will give you the increment. It will follow the process. Otherwise, if you want that it should be repeated, along with the control key, drag it, it will repeat the content you have made. Like say, for example, if it is 1, 2, and 3, and you want to repeat it with the, select these three, then with the control, press control key and drag, it will give you 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Understand? Yes. Another effective way to have a series, like suppose you have a number 1 2 and you want that there should be a serial number counted. Another good way is select these two cells, then again go to this point. When you'll reach this point where this square pointer is given, just double click, it will drag it to, it automatically understand, the interface automatically understand the last row which is filled. Here the 19th row is filled with the number 80. So it will automatically reach to the last row filled, and this can be easily done. I'll repeat how it is done. Just select the cells. When you'll select the two cells, it identifies कि क्या series चल रही है. The series क्या चल रही है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, तो 2 के बाद 3 आएगा. All you need to do is just click on the right bottom corner and double click here. It will automatically print the series. Now, suppose we come to the date portion. Suppose we want that the date should be entered. Very important.
Suppose I'm writing 1/1/24. So जैसे ही मैं इस पे enter press करता हूँ, it understands that this is one of the format of entering the date in the format of day, month, and year. So by default, it will take as 01/01/2024, where 01 understands for first of 01, another stands for January, and 2024 is the year. Now, if I'll drag it, only the single cell, if I'll drag, what will happen? Can anyone guess? You can write on the chat box also. Yes, exactly. When you will drag this particular, I'll show you. It will go with the incremental dates, like 1st January, 2nd January, and 17th in the similar fashion, 18th January. This is done with the when you scroll or drag the dates. But if you want that, I have written 1st Jan 24, and only this should be copied in the entire all the cells which we want. You will click here at the corner, press the control key, and when you will drag, it will automatically show you the same date. Understand? Yes. In the similar fashion, when you have an alphabet in an order, say suppose we have A, then we have B. I'll just make it to the center. Now, if you drag AB till the bottom, very important, it will show you the repeated AB. Very important. If you will press AB, it does not understand that this series is to be followed. Only do it just copy paste the system. Yes, but if you drag till the bottom, all you need to do is you need to give, I'll just show you again. This is A, this is B, this is C. All you need to do is, if you want that after C, it should show you D, then after D, it should show you E. How you will do? Suppose this is ABC, and I want that by default, if I'll do, it should follow the trend. Hope you're understanding that if it is A, this is B, C, I don't want to write like D, E, F, and I want that I should scroll and it should give me E, F, G, H, everything, but by default, it is not giving. So what you'll do is, can anyone guess? This one. I'm not getting any response from anyone. Control plus drag. Pardon? Control plus No. Another? Anybody else? I'm just removing. No fills. Then I'll come with dates also, and I'll come with months also, and I will come with random entry. Random entry means you have letters, you have words, and what happens if you will drag? What happens? So I just leave this for the query for 30 seconds. Where is the question mark? I'll show you the days. Suppose you have Sunday, and if I drag by default, it will automatically start giving me different days. But if I want the Sundays only, what I'll do is, I'll press control key. Yes, very good. If instead you can add it to the chat box also. I'm receiving. Yes, very nice, very nice.
Now in the drag data entry, another is in the similar fashion. If you type Jan, it understand that it is a January. You will drag it. It will give you the series. But if you want that only the similar data it should follow, you should press Control key and it will be done. Yes, but suppose you have a serial number with the alphabets as well as the number. The good thing about Excel is if you drag it, it will give you the incremental numbers. Okay, it will not change your alphabets, rather it will increase your number y the way you want. Say for example, this is, I have copied this. Suppose I'm taking that the first is QW 1 to 1 to 1, another is 1 to 1 to 2. Now if you want, instead of here, suppose I'm writing it 3, that means we have the increment of plus 2. It is 21, it is 23. Now you want that it should follow the same trend. Just try to select the 2 and drag the cell till bottom. So 23, then 25, 27, 29. So the way it goes very effectively. Yes. So you can practice it once. Yes. Yes. I'll just give you 2 minutes. You can practice. Then I'll start again. Excuse me, sir. Yes. Yes. You can send your queries there. You can send on chat box also. Sir, can you please repeat this last query again? Yes. Just I'm just repeating. Those who have not understood, I'm just repeating it again. Sir, there is a query, sir. Just 1 second. I'm sharing the screen. I'm sharing the entire screen. Okay. What we were discussing is I was discussing how to enter the data into your MS Excel. So what I was telling you, is my screen visible? No, sir. No, Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay. So in MS Excel, what we are trying to do is, as I just said, that entering the data is as simple as we enter in the MS Word. So the basic difference between entering the data Sir, into your MS, people. Your screen is not visible. pardon, Your screen is not visible. Not visible. screen is not visible.
Now it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm not getting what you're saying. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we were discussing is of that how to enter the data into the MS Excel. So entering the data is as simple as entering into the MS Word. Like you can type directly from your MS Word, but formatting of that data is much effective and much easier in case of MS Excel. Like for example, I told you how to enter any kind of series in MS Excel. There are different ways to enter the particular series. Like for example, if you want to enter any number, say we want to enter a serial number. So 1, 2, the way we wanted it, we did it in the way. We typed 1, then we typed 2, then it automatically understands the series. All you need to do is, I'm just selecting and pressing the delete key. Then to copy, or we can say to have the number in a series, what we do is there are two methods. Either one, you scroll down, it will automatically follow the series. Another method is you double click at the right bottom point, the square button. Just take your mouse and double click, it will all automatically follow the trend. But if you want to follow the trend, like I have written here 1, 2, 3, again it is, I'm just making it with different colors. Yes, if you want that the trend of series should be like 1, 2, 3, 1, 2, 3. So all you need to do is select the cells you want them to be repeated, then press the control key and then drag. It will follow the series in the repeated manner. This is done for the numbers. Yes. Then for dates, as I just said, if you want that different dates should be copied, and in the similar fashion, same date, how it can be copied, then the days of the week, how the same are copied. Yes, how the consecutive dates are copied, like Sunday, Monday, this series. You don't have to type it again and again. All you need to do is you write Sunday, like you write January, go to this point, double click here, it will follow the trend, and it will follow the trend till the रो जहां तक आपने फिल किया है. यहाँ पे हमने 19th रो तक फिल किया है. You can see this is the 19th row where serial number 1 to 18 is written. So it automatically stops. But if you want to drag it, you can drag it to the extent you want. Another good thing is it is not like that it follows only the +1 increment. Yes, like for example, here we have done. Yes, in the similar fashion, alphabet also we have done. But for random entry, what it do is, if you have any kind of random entry, say for example, we have 1, then 3. Yes. So if you want that your next number should be with the increment of 2, all you need to do is similar fashion, just select the two cells and drag them. So it will automatically follow the same series. Yes, this is what we can do with the drag drop facility of the MS Excel. So data entering is very simple in MS Excel. Sir, there's one doubt, sir. Yes. Sir, in the like I've tried it in the MS Excel. So like in the date column, so like I've dragged the inputted value, sir. But in the like Just column, can you the just cooperate for 1 second? I'm just bringing the headphones. Just 1 minute. right, sir.
Just 1 minute. Am I audible? Yes, sir. Now you are also audible. Yes, now you can ask your query one. Sir, I was as I was saying, sir, like I had tried the inputting the value in the column date, sir, on Yes, the yes. D, sir. Now, in from the like the cell 11 till the cell 20th, sir, so it is showing the hash value, sir. Like, what does it indicate, sir? Very good. All you need to do is Yes, sir. follow my advice. Click on the top of your column like this. The entire column will be selected. Sir, Is it done? yes, sir. Now go at the corner of the column like this Sir, and increase the size of your cell. Either or just double click, it will automatically show you the value. Now it is showing the values. yes, sir. Actually, the thing is, this kind of error was seen. Yes, sir. So it is the I will my next topic is the errors only. I'll show you what my topic. Okay, we have today we will be covering error handling in formulas. अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, but it nice that you have covered this. This is also one kind of error that occurs. This is not an error. It shows that the space selected is less. So जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि either double click, it automatically takes the size of the cell, or if you want it bigger. So now is it clear? Sir, right, sir. Thank you, sir. Okay, okay, very nice. You can just write all the queries in a piece of paper, and at the last you can, that will also be a good effective way, na? Sir, will do, So sir. great, great, great. So coming to next, like how now you understand how to increase the size, color of the fonts. Yes. Now one thing very effective. This is you can say that the trick for the today. Suppose you have any data. Yes. I'm writing it like say Gagan Bansal MS Excel. Then suppose by default I have made 7-8 spaces and then I'm writing India. Yes. Now I am trying to copy this, and or you can say that I'm just dragging it here. We have this kind of data. But instead of this kind of effective data, what I require was I would have required that after the L, Excel's L, I should have one space. Then after this column, I should have one space. Okay. But my data is very disoriented. Like for example, after Gagin, we have different spaces. Then after MS also, we have different spaces. In the similar fashion, suppose before Gagan, we have different spaces. Then we have uneven spaces after Excel. Yes, then we have uneven spaces before say whatsoever. You can say that we have a data in which we have very uneven kind of spaces in between the different letters of the sentence. Yes, but we want that it should be very effectively written, that every data should be written in the effective fashion. So in that case, we have a trick for the Excel. All you need to do is, before telling you the trick, I'll just tell you one thing very important. We have n number of formulas in MS Excel. You can see this tab. We have n number of formulas जिसको आप इंटरफेस के थ्रू वर्क कर सकते हैं. बट अगर आपको एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इनपुट करना है, इफ यू वांट टू इनपुट एनी फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल like plus minus at algebraic non-algebraic any kind of tricks, all you need to do is you need to input the equal to sign before starting any formula. Once you put the equal to sign, you can have any kind of formula you want to input in Excel. Yes.
So before coming to formulas, I was just trying to tell you a small effective trick that if you have a very uneven kind of data and you want that it should be effectively written, that if the words are Gagan Bansal MS Excel India, it should have one space only between every words. So for that, you have a very simple trick in MS Excel. Press equals to is used to enter any kind of formulas in Excel. Then try to type trim. So as you will type trim, we have a very good interface that it tells us कि ये particular command करती क्या है. So what it says is trim removes all spaces from a text string except for single space. तो क्या करेगा, जैसे ही हमने trim select किया फिर हम bracket open करते हैं. अब ये बोल देता है कि क्या करना है, बोल रहा है text डालिए. तो what we'll do is we'll select this cell, we'll close the bracket and we'll press enter. You can see that it has become uniform. Now suppose we had a huge number of datas in this complete column. So all you need to do is, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने ड्रैग में आपको बताया कि सीरीज ड्रैग करनी है तो ऐसे होगा, अल्फाबेट ड्रैग करना है तो ये करना है. ऐसे ही अगर फॉर्मूला ड्रैग करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सेलेक्ट दी सेल जिसमें आपका फॉर्मूला लगा हुआ है एंड ड्रैग इट. It will copy the same formula for the entire worksheet. So hope you understand, and this is very effective, है ना? Yes. Yes, sir. So this is also very effective when you have uneven kind of data in MS Excel and you want that it should be very effectively used. So in that case, all you need to do is just go with the trim. Now we'll come with entering the basic formulas in MS Excel. I'll just see your modules. ठीक है, merging and unmerging, cell alignment. What is cell alignment? Like for example, this is your cell alignment. Like you have any kind of suppose this only, this is data. You want that it should be at the left, it is at the left. You want it should be at the right, it will go at right. If you want it should be in middle, it will go in the middle. Then in the height, here it is. If you want it should be at the bottom. And whenever you will take your mouse to these tools, it will automatically tell you what this particular tool do. Like for example, I have taken my mouse to this bottom alignment. It's telling that align text to the bottom. अगर मैं उसको center पे ले जाना चाहता हूँ, I'll just click here, middle align, then top align. Yes, this is the alignment. Then if you have certain data, you want that it should, like say for example, I have started it from the left, but I want that it should go a bit towards right. Then you can see this increase indent. You can see, so it adds 2 to 4 spaces, and आप जितना उसको लेफ्ट या राइट में ले जाना चाहे ले जा सकते हैं. दिस इज नोन एज डिक्रीज इंडेंट, दिस इज नोन एज इंक्रीज इंडेंट. कौन सा प्लस 15 प्लस? अरे बहुत बड़ा है, मैंने देख रखा है. किसका फोन जगा के ऊपर. I have given you certain relaxations just because I wanted it to be in a queried form. So okay, no issues, it should go the way it is going. What I was explaining. Okay, we were understanding the alignment. Font is clear to you? Yes. Font, type of font, sir. size of font, bold, italic, then Yes, sir. borders, colors, then color of the text, clear. Alignment is clear to you people. Then numbers, like say for example, I'm again repeating it. Number, suppose with the help of keyboard, we'll type any number. Yes. Now if we want that this number should be in currency, it
we want it in currency, it will take the currency, it will by default ये हमें symbol दिखा रहा है, but if we want that it should be in INR or our country's rupees format, we can do that also. ठीक है, then accounting short long, these are all different fraction, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम कर लेंगे. Suppose आपके पास डाटा आता है which is in fraction form, ठीक है, suppose 121212 dot 3434. Now I'll just make it in जनरल फॉर्मेट. ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये नंबर जो है इसके जो डेसिमल्स हैं केवल 2 रहे, तो इट विल यू कैन यूज दिस इज नोन एज decrease decimals. If you want to increase it, you can increase it the way you want. Yes, then in the styles we have formats for table. There are different formats for table. Suppose I will clean this with no fills. If you want that this particular table should have a predefined formats of different colors, so you can select and press OK. It will be done the way you want. Then every cell has different kind of styles. You can make it the pre-models also. मैं अभी इसको समझा नहीं रहा हूँ, but these are similar as we do in MS Word. Now condition formatting, it is very effective tool. ठीक है, where we can highlight any cell based on any conditions greater than less than. We will study this, but before that we must understand how to input a basic formulas and what are the major features of MS Excel that are need to be understand. Once you understand, we'll make a big table, then we'll go for the condition formatting, right? So we will study highlighting cells. So एक छोटा सा gist दे देता हूँ when the topic is started. Since highlighting the cell takes into consideration everything, like if you have any kind of big data in which you have a number of students whose marks are also entered, whose percentage of attendance is also entered. So if you want that all all those all those cells should be highlighted which has the value grade whose attendance is more than 60%, or you want to highlight with red with all the cells whose percentage is less than 60%, or you want it in certain range of numerical values. Then if you want that my cell gets when it suppose I have your list of students, then I am having present and absent. So you want that whenever I'll press present, whenever I'll type present, it should be green. Whenever I'll type absent, it should go automatically red. So these kind of things can be done very easily. In the similar fashion, suppose like duplicate values means आपके पास कोई भी एक कॉलम ऑफ डाटा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि जो जो सेल्स रिपीट हो रहे हैं जिनमें डुप्लीकेट नेम्स है वो किसी एक पर्टिकुलर फॉन्ट में चले जाए या किसी पर्टिकुलर कलर में कन्वर्ट हो जाए. सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन एंड यू कैन मेक योर ओन रूल्स ऑल्सो. लाइक अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो आप अपने की एक रेंज बना लीजिए, जैसे कि जिनके 1 से 5 तक के मार्क्स हैं तो ऐसा हो जाएगा, और फिर 6 से 7 छोड़ दीजिए, देन 8 से 12 हैं तो ऐसा कर दीजिए. तो या फिर जिसके ऑड मार्क्स हैं या जिसके इवन मार्क्स हैं या जिसकी ऑड एज है, कुछ भी आप कंडीशन अपने आप से बना के रूल्स बना सकते हैं. ठीक है, देन यू हैव टॉप बॉटम रूल ऑल्सो कि टॉप 100, टॉप 10, टॉप 50, उस तरीके से सेल्स को आप कंडीशन करके उनमें अपना डाटा इनपुट कर सकते हैं. अनदर वेरी इफेक्टिव इज डाटा बार. ये मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं केवल जीस्ट कर रहा हूँ. कंडीशन फॉर्मेटिंग पे हम एक पूरा सेशन लेंगे, दैट इज वेरी इफेक्टिव सेशन. डाटा बार जैसे कि लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि सपोज हमें कुछ ग्राफ बनाना है जिसमें हमने बताया कि सम स्टूडेंट्स है 50%, सम है 60%. तो ये क्या करेगा कि आपको एक इंक्रीमेंटल बार दे देगा कि 50 अगर है तो 50 कलर कर 50 जितना बड़ा कर देगा, 60 करेगा तो इट विल बी ग्रेटर देन 50. सो दिस काइंड ऑफ वेरी इफेक्टिव कंडीशनिंग दैट यू कैन इमेजिन यू कैन डू हियर ऑल्सो. तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इमेजिनेशन कि आप चाहते हैं कि जिनके भी नाम ए से शुरू होते हैं वो ऐसा हो जाए, जिनके भी एस से शुरू होते हैं ऐसा. सो द न्यू रूल्स ऑल्सो कैन बी फ्रेम्ड. और अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई रूल हटाना है तो यू कैन मैनेज रूल्स ऑल्सो एंड यू कैन क्लियर रूल्स ऑल्सो. ठीक है, सो दिस वी विल बी टेकिंग.
सेल्स फॉर्मेटिंग में मैंने आपको पहले बता दिया था, सपोज इंसर्ट करना है आपको कोई सेल, से फॉर एग्जांपल अभी ये 2 सेल्स हैं, ठीक है। पहले मैं इस टेबल को बिल्कुल ब्लैंक फॉर्मेट में ले आता हूँ, ठीक है। एक आई एम जस्ट एडिंग यू दोज हु आर okay. Now please don't move from the lobby, actually it is distracting our rhythm. तो मैं ये बता रहा था कि suppose you want to insert any cell in between 2 cells, you want to insert any row, like for example say this is 7, I want to insert a row, so I'll just add a row in the similar fashion. If you want that you want to insert a column, तो column select करेंगे, जैसे ही आप insert पे जाके column करेंगे तो उन दोनों के बीच में एक column add कर देगा. Then in the similar manner you want to delete, you want to format. Then another very effective thing is editing, जो कि हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो प्री डिफाइंड हमारे पास कुछ GUIs टैब्स हैं, टूल्स हैं, जिसमें कि सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम हम सब करते हैं, बट विल गो, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, विल जस्ट सी हाउ द फॉर्मूलाज आर वर्किंग इन सिंपलेस्ट मैनर, सो दैट विल गो, ठीक है। कंडीशन फॉर्मेटिंग मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, मैंने बस जीस्ट कर रहा हूँ। देन डिलीटिंग, रीनेमिंग, मूविंग वर्कशीट्स, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पेज सेटअप हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैं आपको वेरी इफेक्टिव वी विल बी कमिंग टू आवर मॉड्यूल 3 विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव, जिसमें कि हम फॉर्मूलाज और बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ सिंपल टेबल फॉर यू पीपल, ठीक है। मैं एक नई शीट ले लेता हूँ और मैं इसमें बनाता हूँ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस, जितना मैंने बताया उसमें से अगर किसी को क्वेरी है तो पूछ लीजिए। Can you repeat trim trick? कैन यू रिपीट? Trim trick. पार्डन? अच्छा, ट्रिम ट्रिक, Trim ओके trick. Trim. ओके ओके। Till then, those who want to practice, they can practice. I'm just explaining them again. कहाँ, where I have done that. Okay. So what I was telling is, suppose आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, जिसमें कि आपके पास बहुत ही रैंडम डाटा आपने कहीं से कॉपी किया, ठीक है। और आपने क्या किया कि मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने कहीं से कोई डाटा कॉपी किया, जिसमें क्या हो रहा था कि यू हैव अनइवन स्पेस। अब आप केवल अरे भाई अभी तो क्या तू वहां से ओनली आई विल तो स्पीक, बैंक यस। उसमें आ गया और वहाँ कुछ नहीं है भाई और कुछ नो इश्यूज। आप लोगों का मोबाइल बच जाता, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता होगा, आई नो इट इज नॉट इंटेंशनली। तो मैं ये बता रहा था, क्वेरी किसने पूछा था, व्हाट्स योर नेम? Rahul. ओके राहुल, व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इज कि सपोज यू हैव एनी डाटा जिसमें कि अनइवन स्पेसेस आ जाते हैं, कि किसी एक, जैसा कि आप इसमें पर्टिकुलरली देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक डाटा था जिसमें क्या था कि मैं चाहता था कि ऐसा है कि से फॉर एग्जांपल गगन बंसल MS एक्सेल लिखा है और हर 2 वर्ड्स के बीच में एक ही स्पेस हो। बट आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मैं आपको सीरियल नंबर से समझाऊं, ठीक है। तो हम कैसे ड्रैग करेंगे, बस 1 और 2 लिख के डबल क्लिक कर देंगे। यस। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे 1 में वी हैव अ डाटा, एक हमने सेल में डाटा इनपुट किया गगन बंसल MS एक्सेल इंडिया। तो ये बड़ा इफेक्टिव डाटा था कि हर वर्ल्ड के बीच में एक एक स्पेस था। बट हुआ क्या कि वी हैव रिसीव्ड सम डाटा इन विच
there was uneven spaces in between the two words. Like for example here गगन और बंसल के बीच में there are n number of spaces. Similarly MS और एक्सेल के बीच में, फिर एक्सेल और इंडिया के बीच में. तो अगर आप इसको मैनुअली करना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले डबल क्लिक करेंगे सेल पे, आप सेल पे आए, फिर आप बैक स्पेस दबाना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फिर आप ई पे जाके डबल क्लिक करेंगे, फिर आप बैक स्पेस करेंगे. तो ऐसे आपको बहुत टाइम लग जाएगा. तो और ऐसे अगर एक बार में आप करना है फॉर द कंप्लीट डाटा, हम क्या करेंगे, वी हैव अ ट्रिक इन एमएस एक्सेल विच इज अ ट्रिम ट्रिक. इसको क्या करते हैं, आपको सपोज एक कॉलम इंसर्ट करेंगे. ठीक है, ये एक ब्लैंक कॉलम में मैंने इंसर्ट किया. आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे. कोई भी फॉर्मूला जब लगाते हैं एमएस एक्सेल में, तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इक्वल टू का साइन दबाना पड़ता है. तो उसके बाद आप कोई भी फॉर्मूला उसमें लगाते हैं तब वो वर्क करता है. तो एक फॉर्मूला होता है TRIM. उसका फंक्शन क्या होता है, जैसे ही आप TRIM लिखेंगे. अच्छा, एक्सेल में वन थिंग इज वेरी इफेक्टिव, इट इज नॉट ए केस सेंसिटिव. आप स्मॉल में लिखेंगे तब भी ऐसे ही आएगा, और आप कैप्स लॉक में लिखेंगे तब भी वही बात रहेगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे ट्रिम दबाया, तो मैं जैसे ट्रिम लिख रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि वो मुझे पहले ही बोल दे रहा है कि व्हाट इज दिस फंक्शन स्टैंड्स फॉर. इट सेज दैट इट रिमूव्स ऑल स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स. वो केवल एक स्पेस रहने देगा, बाकी सारे स्पेसेस हटा देगा पूरे सेल्स में से. तो मैंने ट्रिम किया. फिर उसके बाद किस चीज में ये लगाना है, आप ब्रैकेट लगाएंगे. जस्ट वन सेकेंड. ओके सॉरी. ठीक है, फिर ये पूछता है टेक्स्ट. तो आप क्या करेंगे, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो आपने जैसे ये सेल सेलेक्ट किया तो वो डाटा सारा कॉपी हो जाता है. देन क्लोज योर ब्रैकेट, यू विल प्रेस एंटर. ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली. अभी मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला कॉपी कर रखा था, तो इसीलिए एंटर करते पूरे में आ गया. अदरवाइज इट विल कम टू ओनली वन सेल. तो आप देख सकते हैं कि जितने भी अनइवन स्पेसेस थे किसी भी पोजीशन पे, वो सही हो गए. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay, Rahul. So just take a 30 seconds of break. I'll start with the next very effective topic, that is how to write different computational formulas in MS Excel. I'm just trying to create a sheet. Till then you can wait for 2 minutes.
Okay, then. Am I audible? Yes, Am sir. I audible? Okay, my Yes, screen sir. is visible. My screen is visible. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Okay. Now we will go for the next very important topic of MS Excel, that is how to compute any two numbers or the group of numbers using various formulas or basic mathematical operators in MS Excel. ठीक है? There are different basic operators, that is plus, minus, star, that is multiply, divide in MS Excel. So we will see that how these particular parameter operators work. Okay. Then we will go with cell referencing. Then we go with complex formulas. Okay. We'll take all the formulas and tricks as and when they are effectively required. Now suppose what I told you, that before using any formula in MS Excel, all you need to do is you will start with Equal to. equal to sign. Very great. Yes. So like for example, we have two rows. One is highlighted with orange color representing number one. Another I have represented with the green showing the number two. Now if I want to add these two numbers, simple two numbers, all you need to do is you will press equal to sign. If you understand this particular thing, you can do anything you want. Okay, you will be able to do anything you want in MS Excel related to the general problem solving. So all you need to do is equal to, then break it open. Now what you need to do is you want to add these two numbers. So all you'll do is just click on this cell. It is showing you G column and 2, that is value 20. Then with the help of keyboard, press plus sign, then take another number, then bracket close, enter. Yes. So what it gives is give you the answer of adding two numbers. As simple. Yes. Now suppose instead of this, we have n number of numbers. Like I have entered here, we have a list of numbers you want to add. Yes. Hope you're understanding what I mean to say. Now, again, if Yes, we'll sir. start, there are two ways. If we'll start using the way I told you just now, like press equal to, then bracket open, then this first cell, then plus, then second cell, then plus, then third cell, then plus. So it will take, there is no use of using MS Excel, right? Now, if you have a n number of numbers, in that case, you have a very effective formula in MS Excel, Equal to SUM, sum. sum. Yes. Yes. When you type sum, it automatically tell you that क्या करता है ये formula. It adds all the number in the range of cells. ठीक है, जिनको आता है they'll stay very quiet, but the thing is I'm pre-assuming that कि I'm starting from the very beginning. So till we reach the intermediate, this particular tools will help you very effectively. तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर किसी दो numbers का आपको sum करना है, so you can just add these two numbers. But if you have a list of series, then all you will do is press equals to, then type SUM, then bracket open, then with the help of mouse select the entire range या entire cells जिसका आपको sum करना है. तो मैंने क्या किया, this is L column and 2, from L2 to L14 इसने सारे ले लिए. Just bracket close and enter. It will give you the result. Yes. Very effective. Another way to do this is, you understand this method, equals to, then press sum, the from
अच्छा, आप कुछ भी करते हैं, दैट फॉर्मूला इज विजिबल ऑन योर फॉर्मूला बार, दिस इज नोन एज योर फॉर्मूला बार। तो आप जैसे ही कुछ भी लिखते हैं तो वो यहाँ आ जाता है, तो वो बताता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका वैल्यूज नहीं है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका फॉर्मूला है। तो इट गिव्स यू द आंसर ऑफ दिस एंटायर रेंज। नाउ अनदर इफेक्टिव मेथड इज, suppose in the similar way we have this, now with the help of the editing toolbar also you can do। आपको क्या करना है, केवल इस सेल को सिलेक्ट करना है जहां पे आप टोटल चाहते हैं। आपको यहां दिख रहा है सम, जस्ट क्लिक हेयर, प्रेस दी सम। वो पूछता है आपसे कहां से कहां तक का, तो वो बाय डिफॉल्ट देखिए सिलेक्ट कर ले रहा है। नाउ वी हैव m column from m2 to m14, just press enter, it will give you the similar answer। So there are various ways to do the same problem, so whichever easiest you feel you do in the similar fashion। Suppose you have two now we'll go with the multiply, press equals to, bracket open, then select first number, then what is the operator for the multiply, we have this star। How to type the star, it is with the help of shift key, press the 8 numeric key on your keyboard। तो वहां पे स्टार का सिंबल बना होता है। कोई भी सिंबल्स जो कि नंबर के ऊपर बने होते हैं उसको आप कैसे क्लिक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। देन सेलेक्ट कि मल्टीप्लाई किससे करना है, सेलेक्ट द सेकंड नंबर, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इट विल गिव यू द आंसर। यस, हमने यहाँ पे ऐड किया था। अब सपोज हमें, हमारे पास रेंज है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, ठीक है। दो रेंज है हमारे पास, एक नंबर 1 की, एक नंबर 2 की। पहले मैंने ऑपरेटर से आपको बता दिया, ऑपरेटर से कैसे करते हैं, देखिए फॉर्मूला बार में लिखा आ गया। हम क्या करेंगे, पहले पहला सेल, सेल की लोकेशन कैसे, क्या लोकेशन वैल्यू क्या होती है। सपोज जी सेल, जी कॉलम है, फोर्थ थर्ड रो है, दिस इज जी कॉलम थर्ड रो, तो इसका नाम हो जाएगा G3। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, H3। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, G3 से H3 को मल्टीप्लाई कर रखा है। अब अगर ये 40 की जगह अगर 30 कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। 20 की जगह कुछ और वैल्यू लिख देंगे, तो जो भी आप वैल्यू करेंगे अपने आप आपका फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। दिस इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1820 लिखा था, अगर 10 माइनस कर रहे हैं तो 1810 बाय डिफॉल्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि अगर हमें सिंगल नंबर को सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास एक ही है, ठीक है। क्या किया मैंने, इक्वल टू किया 10, इक्वल टू किया ब्रैकेट ओपन 10 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, दैट इज L2 मल्टीप्लाई बाय M2। आंसर आ गया आपका 200, ठीक है। नाउ सपोज यू वांट दैट, आपके पास अगेन सीरीज ऑफ नंबर्स है, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स है, एक नंबर की रेंज ये है, एक नंबर की रेंज ये, आप चाहते हैं कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो वही जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ड्रैग एंड ड्रॉ, ठीक है, ड्रैग कमांड इन MS एक्सेल। आप क्या करेंगे कि आप चाहते हैं कि सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो मैंने आपको ड्रैग के बहुत सारे कंडीशंस तरीके भी बताए हैं। ऑल यू कैन डू इज, आप इसको पूरा नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, आपका सेम फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। अब ये देखिए हैश आ रहा है, इस हैश का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो बड़ी है, समझ आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, लेकिन जगह कम है। तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर n कॉलम के कॉर्नर पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, अपने आप वो स्पेस ले लेगा, ठीक है। इज इट वेरी इफेक्टिव, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, बट इट प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई अगर एक नंबर को एक नंबर से करना है आपने कर दिया, लेकिन अगर आपके पास पूरी रेंज है, ठीक है, और कॉलम्स में, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अनदर इफेक्टिव वे टू मल्टीप्लाई टू नंबर इज, एक और तरीका क्या हो सकता है, इक्वल टू करेंगे
MU, है ना? आप जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे PRODUCT, जैसे ही आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा पहला नंबर, आपने लिखा ये L2, ठीक है। फिर वो पूछेगा दूसरा नंबर, आपने लिखा ये कॉमा के साथ, इसको बंद कर दिया, आपको आंसर दे रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कब इफेक्टिव होता है? आपने इसको फिर ड्रैग करके पेस्ट कर दिया, ये हो जाएगा। एक तीसरा तरीका इसको करने का क्या है? अगेन एडिटिंग टूल बार में इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मोर फंक्शंस में आएंगे, वहां पे आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट का एक इफेक्टिव, ये तो हमने जो लिखा था ये तो था ऐड का, ठीक है। प्रोडक्ट के जब करते हैं तो क्या करते हैं? इक्वल टू PRO, जैसे ही आप PRO लिखेंगे ये अपने आप दिखाने लगता है, ठीक है। आप एरो, कीबोर्ड के एरो की से नीचे आइए और टैब दबाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरे नंबर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 60, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाए, तो आप बस ये तीनों सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फ्रॉम एनी रेंज टू एनी रेंज, इन दी कॉलम ऑल्सो एंड इन दी रो ऑल्सो। आप चाहते हैं कि ऐसे मल्टीप्लाई हो जाए रोज तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप चाहते हैं कॉलम मल्टीप्लाई हो जाए तो कॉलम भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इन द सिमिलर फैशन, जस्ट 1 सेकेंड, किसी को अभी तक कोई डाउट है तो पूछिए। आई एम जस्ट एंटरिंग एवरी ऑल अदर। Okay, if none of you have any problems, so we'll go with the next, that is dividing of two numbers. I'll just come back. Okay, now अब आपको समझ आने लग गया होगा कुछ कुछ, ठीक है। just equal to, bracket open, select first number which is in numerator, ऊपर आपको जो divide by, use the divide symbol. Sir, screen is not visible. Sorry, just 1 second. Thank you. Just sharing the Excel sheet. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, okay. तो जब हम डिवाइड करते हैं इट गोज इन द सिमिलर फैशन, है ना। इक्वल टू करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहला नंबर सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड के लिए हम स्लैश, है ना, फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, देन सेलेक्ट द सेकंड नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यस, अब अगर मैं, जैसा मैंने अभी तक मैं करता, इसको डिलीट कर देता हूं। अब अगर मेरे को सेम यहां भी यूज करना है तो मैं क्या करूंगा? इक्वल टू से फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर, एंटर, ठीक है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे सारे नंबर नंबर 1 जो है नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। मुझे क्या करना है? केवल या तो डबल क्लिक कर देना है, क्योंकि देखो सेम है तो वो 220 डिवाइड बाई 220, 20 डिवाइड, और या फिर मैं इसको
डबल क्लिक कर रहा हूँ या फिर मैं उसको फॉर्मूला जहां तक मैं चाहता हूँ वहां तक मैं उसको ट्रैक कर देता हूँ। तो वेरी क्लियर, यस। एंड इन द सेम फैशन अब आप अपने आप करके देख सकते हैं। इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन, if you want to subtract two numbers, select first number, then minus sign. Now with the help of mouse, select second number, then bracket close, enter. Yes. So this is also SUBTRACT. If you want to subtract two numbers, जो कि अगर बहुत बड़ी range given है, तो just equal to sign, bracket open, select first number, minus, select second number, bracket close, enter. Answer is -10. Yes. 10 minus 20 is -10. Sir, what if there are more than two numbers? से फॉर एग्जाम्पल यू, वो मैं बता रहा हूँ, सपोज अगर रेंज को करना है आपको, ये पूरे कॉलम में करना है, तो अगेन यू विल ड्रैग दी फॉर्मूला। जब ड्रॉप करते हैं तो फॉर्मूला ड्रैग होता है, ठीक है, 140 डिवाइड बाय 140। अब जैसा इन्होंने पूछा, यू वांट टू सब्ट्रैक्ट सेवरल नंबर्स फ्रॉम वन नंबर, व्हाट्स योर क्वेरी? यू वांट टू सब्ट्रैक्ट सेवरल नंबर फ्रॉम वन नंबर, like suppose for example I have 100, then रोज की बात कर लेते हैं, सपोज दिस इज 10। अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अब डाटा एंट्री में आपको बताया नहीं, कि इफ यू वांट टू मूव इन अ रो, जैसे 10 के बाद मैं इधर 12 लिख रहा हूँ और मुझे नेक्स्ट रो में जाना है, तो आई विल प्रेस टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड, यू विल प्रेस टैब, ठीक है। और अगर आपको रोज चेंज करनी है, नीचे आना है, तो यू विल प्रेस एंटर, राइट। अगर आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो यू विल प्रेस टैब। क्लियर? तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब ये आपके ऊपर है, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इक्वल टू किया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, 100 माइनस, मैं चाहता हूं कि इसके बाद के सब नंबर माइनस करें, तो फिर एक ब्रैकेट लगाइए, सारे नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे सेलेक्ट करेंगे, इस सेल पे पहले क्लिक किया, फिर इसके बाद, ठीक है, जहां तक भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। वो देखिए एरर दे रहा है कि मैंने एक ब्रैकेट कम लगाया। वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। तो खुद बता दे रहा है, दिस इज द एक्सीलेंट इंटरफेस, की ये बता रहा है कि आपने एक ब्रैकेट कम लगाया है, तो डू यू वांट टू एक्सेप्ट, बोले यस, है ना। तो 100 माइनस 10 सर इज 90, 100 माइनस 22 इज 100 माइनस 12 इज, क्या किया इन्होंने, हाँ बोलिए बोलिए। सर आई हैव वन डाउट, व्हेन यू से कि टैब से हम लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, बट व्हेन द डाटा एंटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो फिर देन व्हाट शुड बी यू यूज्ड? When you want to add data from, राइट टू लेफ्ट। when you want to move from left, then you can directly, राइट टू लेफ्ट। if you want to move from left to right or right to left, you राइट। can directly use arrow keys also, like for example मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज आई एम राइटिंग एनी डाटा, ठीक है, मैंने लिखा गगन बंसल, ठीक है। अगर आप एरो की से लेफ्ट जाएंगे तो वो सीधा सेल चेंज कर देगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे ओके। हैं? और हाँ हाँ हाँ। अगर आप चाहते हैं, अब इसमें देखिए एक और डाउट होता है कि सपोज मैंने लिखा, वेरी नाइस, मैं बता देता हूँ, मैं बाद में बताने वाला था लेकिन मैं इसका साइज बड़ा करके बताता हूँ आपको, ठीक है। सपोज मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको?
यस सर। ठीक है, मैंने गगन बंसल लिखा और मैंने सपोज आई वाज राइटिंग गगन बंसल MSEXCEL। अब मैंने आपको सिखाया कि जैसे ही आप लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो ये पीछे वाले सेल में चले जाता है। ठीक है, वही। लेकिन आप बहुत बार देखेंगे कि आप लेफ्ट सेल दबा रहे हैं तो ये लेटर्स ले रहा है। दिख रहा है अभी आपको? मैं ए और एन के बीच में कुछ और लिख सकता हूँ, इनके बीच में कुछ और लिख सकता हूँ। आपको दिख रहा है ऐसा? यस सर। ठीक है, ये ऐसा कब होता है? ठीक है, अभी मैंने डबल यहाँ क्लिक। पे डायरेक्ट टाइप किया और मैंने आपसे बोला कि आप बैक करेंगे तो पीछे वाले में जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने आपसे बोला कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ और मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो वो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कीबोर्ड से, मैं दोनों चीजें आपको समझाने की कोशिश। हैज एनीवन आइडेंटिफाइड द केस? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि व्हेन आई सेलेक्ट अ सेल, मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, ठीक है, सिंगल क्लिक किया सेल पे, मैं दोबारा से मिटा देता हूँ उसको। मैंने सिंगल सेल सेलेक्ट किया, आपको कहीं पे भी एडिटिंग बार नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, एक आपको स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन दिखाती है, वो नहीं दिखाई देती है। तो आप कुछ भी लिखेंगे तो फिर उसके बाद अगर आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड एरो की दबाएंगे तो वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ जैसे ये लाइन दिख रही है या आपने डबल क्लिक कर दिया किसी सेल पे, ठीक है, जस्ट देन जैसे ही आपने डबल क्लिक कर दिया तो आपको ये एक एडिटिंग बार दिखाता है, आपको दिखाता है कि आपका कर्सर किस पोजीशन पे है। दिख रहा है आपको? तो यस आपको अगर सर। उसको एडिट करना है तो आप उस केस में एरो की दबाएंगे तो वो लेटर बाय लेटर मूव करेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कब, कई बार क्या होता है कि सपोज मैंने एल की जगह के लिख दिया। ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी लिख रहा था, सपोज मैं गगन बंसल की जगह के लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अभी मेरे को दिख रहा है तो मैं इसको एडिट कर पा रहा हूँ। सपोज मेरे को अगर वापस किसी पोजीशन पे जाना है तो मेरे को पहले डबल क्लिक करना पड़ेगा अपने सेल पे, फिर ये वर्टिकल एडिटिंग पोजिशनल, जिसको हम पोजीशन बोलते हैं, आता है, फिर आप एडिट कर पाते हैं। अगर मेरे को एन और बी के बीच में एक और स्पेस देना है तो आई डबल क्लिक एट दैट पोजीशन, फिर हम स्पेस दे पाएंगे। इसके दो तरीके होते हैं, आइदर यू डू इट हेयर, ठीक है, और यू गो टू दिस फॉर्मूला बार यहाँ ऊपर और डायरेक्टली वहां पे एडिट कर दीजिए। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये चार बेसिक फॉर्मूलाज या बेसिक ऑपरेटर्स जो कि एक्सेल में यूज होते हैं, दैट इज ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट। दीज आर यूज्ड इन एमएस एक्सेल वेरी इफेक्टिवली। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग 2 minutes break, I'll just come back. I'm just taking your attendance.
Should we move forward? Sir, there is a query, sir. Sir, in this, in the MS Excel, sir, can please provide an example of using and effectively using the format painter at once to copy the formatting, sir. In the recent case, the borders or the colors, sir. Yes, yes. I'll just explain you the effective way of using format painter. Sir. What's your name? Sir, Anish Sharma, sir. Anisha, huh? Okay. This is very effective query that Anish has raised, that how to use the format painter in MS Excel or whatsoever you want in any kind of MS world. Suppose, say for example, I'll give you the example here itself. Okay. Is this screen visible? Yes, sir. Okay. I'll just take a small example. Suppose I have this is a I'll copy. I will go to the new sheet, control V. Okay. Delete. Suppose I have made this particular sheet, copy, and I have made another sheet. This is V. Okay. What I did is I have made this, say this is any sheet which has no borders, different font, nothing. ठीक है. Suppose हमारे पास एक ए बी एक कॉलम है जिसमें हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं. हमने क्या किया, पहले नंबर्स थे उनको बॉर्डर कर दिया, फिर उनका फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, फिर उसका साइज जो है हमने से 14 कर दिया. ठीक है. फिर हमने क्या किया, ऊपर की रो को येलो कर दिया. ठीक है. फिर हमने क्या किया, इन दोनों को अलाइनमेंट में सेंटर कर दिया. फिर हमने क्या किया, जो फर्स्ट हमारी हेडिंग्स है उनको बोल्ड कर दिया. कुछ फॉर्मेटिंग कर रहा हूं मैं. ठीक है. फिर मैंने क्या किया, जो हमारे जितने भी नंबर्स हैं उनको
2 डेसिमल प्लेसेस तक ले गए। इस तरीके से हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक और डाटा है, उसमें भी उसी तरीके की फॉर्मेटिंग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, वी विल सेलेक्ट द टेक्स्ट जो फॉर्मेट हमें कॉपी करना है, देन यू गो फॉर दी फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए फॉर्मेट पेंटर वेरी इफेक्टिव थिंग इज, जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये बताता है लाइक द लुक ऑफ पर्टिकुलर सिलेक्शन यू कैन अप्लाई द लुक टू अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला डिजाइन ये कॉपी कर लेता है, फिर आप इसको जब पेस्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं। अनीश, यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो इसने क्या किया, टॉप को येलो कर दिया, इसको सेंटर कर दिया, 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज दे दी। तो आप जैसा फॉर्मेट कॉपी करते हैं वैसा ये पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका तरीका दोबारा से बता देता हूं मैं। ठीक है, क्या किया मैंने, सपोज मेरे सर पास मैं, हाँ बताएं। सर देयर इज अ चेंज इन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर ऑफ नंबर 1। जैसा कि मैंने, हाँ वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन, अब कोई बताएगा फिर मैं बोलता हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी सर बोला था कुछ। तब फर्स्ट टाइम पे मतलब जो फर्स्ट टाइम पे हमने लिखा था तो वहाँ पे कुछ फॉर्म मतलब पॉइंट लगाया था, फिर बाद में चेंज किया हमने उसको। यहाँ हाँ, यहाँ पे पहले स्मॉल में था ये नंबर 1, हाँ हाँ, और उसके पहले उसके बाद मतलब उसके पहले हमने इसमें कुछ मतलब कंडीशनिंग कर दी थी, फॉर्मेट लगा चुके थे हम उस पे। नहीं, फॉर्मेट वो मैक्रोस है, दैट इज डिफरेंट हमने फंक्शन की उसको आप जो जो, मोल्ड कर दिया था पहले ही। हाँ सपोज मैंने इसको मोल्ड किया, अभी जो ये दिख हाँ रहा है, अभी ये जो फॉर्मेट में है ना, इसमें क्या है हाँ हाँ। कि फॉर्मेट का मतलब क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एमएस वर्ल्ड खोलता हूँ पहले, देखो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमएस वर्ल्ड, कहाँ गया, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। एमएस वर्ल्ड में फॉन्ट में एक ऑप्शन आता है केस सेंसिटिविटी का, दिख रहा है आपको, मैंने एमएस वर्ल्ड खोल दिया है। नो सर, इट्स नॉट No, sir. विजिबल। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक्सेल शेयर कर रहा हूँ ना। आई जस्ट शेयर दी स्क्रीन, वेट। एमएस एक्सेल दिख रहा है अब आपको? ओ सॉरी, वर्ल्ड, एमएस वर्ल्ड वर्ड। दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। एमएस वर्ल्ड में भी टूल बार है, टूल बार में फॉन्ट करके एक है। ठीक है, यस सर। एक्सेल में भी है, एक्सेल में भी फॉन्ट, एक टूल बार में फॉन्ट्स है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे और वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि वर्ल्ड में आपको केस दिखाई देता है कि वांट टू चेंज द केस, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल, है ना, दिख रहे हैं, Yes, sir. यस सर। चेंज केस। बट इन केस ऑफ एक्सेल आपको ये नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए अब फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेट्स एडिट करता है। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर टूल बार में कोई भी अगर चेंज करता हूं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सपोज मैं इन दोनों को अभी इटैलिक कर देता हूं, ठीक है, मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है, मैं कलर मैंने चेंज कर ही दिया, मैंने फॉन्ट का कलर रेड कर दिया। ये अभी क्या हो रहा है, मैं इसके फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चेंजेस मैं जो भी करूंगा, सपोज मैं ऊपर की हेडिंग का अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फिर आपको दिखेगा। तो मैं इसको, आई विल सिलेक्ट दिस, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। ठीक, तो मैं ये जितने भी चेंजेस कर रहा हूँ, फिर जब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी इन अ फॉर्मेट पेंटर, और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो वो सब कुछ चेंज कर देगा लेकिन केस चेंज नहीं करता है। बिकॉज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इफ यू वर विद मी, कि आप चाहे कैपिटल केस में लिखे चाहे स्मॉल केस में लिखे, जितने भी फॉर्मूलाज, कंडीशनिंग्स एक्सेल लेता है, वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। आपको मेरी बात याद रहेगी? यस सर। हाँ, तो फॉर्मेट पेंटर में क्या करता है, सब कुछ करता है वो,
ठीक है, विच आर अवेलेबल, की जितने भी इसके स्टाइल्स हैं, मैं कंडीशन भी लगाऊंगा तो कंडीशन भी कॉपी करेगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर्मूला भी कॉपी करेगा। इट विल कॉपी एवरीथिंग, बट एक्सेल इज नॉट अ केस सेंसिटिव टूल, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर इज क्लियर टू यू। Yes, तो sir. बट फिर नंबर मतलब नंबर सेकंड में तो सब कुछ कैपिटल है सेम है, बट व्हाई नॉट इन नंबर वन? खाली ये ना ये यस सर। मैंने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है। अभी मैं सपोज मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूं, तब ये एज इट इज आ जाएगा। अभी मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, अभी मैंने पता है क्या किया है, अभी आप समझे नहीं। सपोज यहाँ पे लिखा होता, सपोज मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और अभी जो है ये सपोज कोई भी इसमें बॉर्डर नहीं है, कोई भी इसमें बोल्ड नहीं है, कोई भी इसमें इटैलिक नहीं है, कोई भी इसमें अंडरलाइन नहीं है, और ये नंबर्स भी कुछ और हैं। ठीक है, कुछ ठीक है, ये कुछ भी नंबर है, और डेसिमल प्लेसेस भी नहीं है, ये जो था बॉर्डर भी नहीं है, एंड इट इज नॉट इवन फील्ड, ये एक रैंडम अनइवन सा डाटा है आपके पास। तो आपने यहाँ तो फॉर्मेटिंग कर ली, मैं चाहता हूँ कि वो वैसी ही फॉर्मेटिंग इधर भी हो जाए। तो जो अनीश मुझसे पूछ रहे थे कि फॉर्मेटिंग पेंटर कैसे चलाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आप इसको कॉपी करते हैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे, ये केवल फॉर्मेट को पेंट कर रहा है। ठीक है, अंदर डाटा जैसा है डाटा वैसे ही रहेगा आपका, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं ओके फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जिस ओके ओके तरीके से वो ओके बना सर। हुआ है दैट, हाँ। तो वो क्या कर रहा है, और ये स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही रहेगा, ये 23 लिखा है तो 23 ही रहेगा। डिजाइन सेम हो गया, इसकी हेडिंग येलो थी, इसकी भी हेडिंग येलो हो गई, इसका कलर रेड था, इसका भी रेड हो गया। इसमें पॉइंट के बाद दो जीरोस थे, इसमें भी पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेसेस ले लिए। इसमें हेडिंग अंडरलाइन थी, बॉर्डर बना हुआ था। दिस वी हैव पेंट कॉपीड दी फॉर्मेट रेदर देन कॉपी पेस्टिंग दी एंटायर वर्कशीट। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप। सर यस सर, यस सर, टोटली हम्म, अंडरस्टैंड। हाँ Sir, हाँ बोलो, sir, बोलिए like बोलिए। we imply that the format painter only works on the Excel worksheets, or can we like do it in the form of Word and Excel? Like for example, if we want to do the format painter, like copy the format of Word to the Excel, so is it possible? हाँ, दैट इज अनदर वे, वो भी मैं बताऊं। Sir, दैट इज हेयर, लाइक से फॉर एग्जाम्पल आई हैव कॉपीड दिस, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। यस सर। Yes, sir. तो मैंने क्या किया, इसको लिया और कॉपी कर दिया। ठीक है, फिर मैं एक्सेल पे आया, मैंने कोई भी एक सेल पे क्लिक किया। तो जब आप पेस्ट में देते हैं ठीक है, पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, आपके होम टैब के पेस्ट में तो बहुत सारे ऑप्शंस देता है। ठीक है, तो उसमें पहला सबसे पहला ऑप्शन होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। sir, समझ आ रहा है अनीश आपको। sir. Okay, it is helpful for everyone, though I am targeting him, but I think everyone is understanding. Otherwise, जैसा आप अपनी एक्सेल फाइल में कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बी इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो वो पूछता है कि मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेट, यानी कि यहाँ जैसा आप कर रहे हैं वैसा फॉर्मेट में चाहिए, या फिर जहां से आपने कॉपी किया वहां के फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो होम टैब में पेस्ट के नीचे वी हैव एन एरो, जैसे ही आप उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, सो इट विल गिव यू टू डिफरेंट ऑप्शंस। अच्छा, ये ऑप्शंस मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये ऑप्शंस मल्टीपल भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज मैं अपनी ये वाली शीट पे ही आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे आ जाते हैं चलो। मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा रखा है ना। अगर, और ये सम क्या है, L2 से L14 तक पूरा है। अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, क्या होगा बताइए, कोई बता सकता है। सेम। क्या लिखा आएगा यहाँ पे,
एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा? क्योंकि एरर सर जो वो क्यों आएगा? सीरीज की L2, सर क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं सेल, हमारा वहां पे L2 का फॉर्मूला लगा हुआ है, और यहाँ पे फिर हमारा इधर जी और ए बी या एफ जी एच आ जाएगा, और है जब ना? सीरीज चेंज हो जाएगी वो। अगर यहाँ पे नंबर्स होते, अगर यहाँ पे पूरे नंबर्स होते, मैंने सपोज यहाँ से कॉपी किया है और मैं कंट्रोल वी करके एंटर करूंगा, तो वो पूछ रहा है कि रेफरेंस क्या है। अभी मैं जब टाइप्स ऑफ एरर में आऊंगा तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि हैश रेफ आरईएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कॉपी तो सम का फॉर्मूला तो कॉपी हो गया, लेकिन सोर्स क्या है, किस चीज को सम करना है, वो उसके पास है ही नहीं, है ना? तो लेकिन एल अगर एल आप 30 चाहते हैं कि 1810 पेस्ट हो, तो आप जैसे ही कॉपी करेंगे एक्सेल में आप देखेंगे वहां तो केवल दो ऑप्शंस आ रहे थे, अब देखिए आपको कितने सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, वो पूछता है कि केवल पिक्चर की तरह सेव कर दें, एक पिक्चर बना दें, वैल्यूज सोर्स फॉर्मेटिंग के बेसिस पे कर दें, वैल्यू नंबर फॉर्मेटिंग के बेसिस पे लिख दें, ठीक है, या खाली वैल्यूज। तो यहां से जैसे ही मैंने कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया, तो ये 1810 सीधा वर्ड हो गया, इसमें ना फॉर्मूला ना लेना कुछ भी। ठीक है, तो एक्सेल टू एक्सेल कॉपी पेस्ट करने के देर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट ways, or we can say there are n number of different ways the same text can be copied and paste। फॉर्मूला पेस्ट करना है, केवल फॉर्मेट पेस्ट करना है। बट अगर आप किसी दूसरे एमएस ऑफिस से एक्सेल में पेस्ट करते हैं, पावर पॉइंट से एमएस एक्सेल में या वर्ड से एमएस एक्सेल में, तो यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शन। वन इज जहां से कॉपी किया है उसके तरह से पेस्ट करना है, या जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे जो आप फॉर्मेट यूज कर रहे हैं उसकी तरह से पेस्ट करना है। ठीक है, क्लियर? Right, sir. Understood, sir. यस सर। Okay, so we have completed the operators, ठीक है, that create formulas using different operators plus minus, और मैंने इसके साथ आपको बेसिक सम एवरेज भी बता दिया है। ठीक है, और आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको दो आपको बता दिए हैं। सम मींस एडिंग टू नंबर्स, एवरेज मींस एवरेज Average. ऑफ द टू नंबर। अभी क्या है, सर जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट, हाँ बोलो। कैन यू प्रोवाइड द प्रैक्टिस शीट्स? Yes, yes, I'll या provide. But the thing is, I have one issue that मैं वो वर्ड आपसे उसमें भी ले लूंगा, क्या कहते हैं, गूगल फॉर्म में भी। एक्चुअली द थिंग इज, मेरे पास जो फॉर्मेट है या मेरे पास जो एम एस एक्सेल है, इट इज दी 21 वर्जन। आपके पास अगर ओल्डर वर्जन है तो, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टूल्स 2007 के बाद जो टूल्स हैं वो काम करते हैं, आपके में भी करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेरी शीट्स दूंगा, आप उसको करके देखिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप डिस्कस कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी पर्सनल थिंग टू आस्क रिलेटेड टू दिस एक्सेल, डेडिकेटेडली टू एक्सेल, I am available to from morning 10 till evening 6 o'clock in KP Nautil block, uh, this graphic era deemed university, in front of the Chanakya block, KP Nautil ओके block, सर। first floor staff room. You can come anytime and we can discuss. If you want any kind of practice sheet, I can give you. If you want any kind of questionnaire, I can give you. If you want the study material, that I will surely provide you at the end. ठीक है? So ऐसा कुछ नहीं है, सर बट फॉर ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल और नॉट ऑफलाइन? offline classes will be surely available. Just 1 second, let me have a call, urgent call to take. Actually, I'm planning to have the offline classes on Sunday if time permits, because this way, though few of you are interested, but what I am observing is from last 2 hours, I am continuously adding and adding you to the lobbies.
ठीक है, so that is also not very effective that from my side I am working on, because I either I can teach or ठीक है, so that is not effective. So all the operations are clear: adding, multiply, divide, subtract. Then if you want to take average of the series, suppose this is the list of numbers, you want to take average in the similar fashion, just equal to equals AV. to average. yes, ठीक है, आप जैसे ही And drag the same. AVERAGE दबाएंगे, ब्रैकेट ओपन, select the range with the Drag the mouse, same. bracket close, enter. Enter. ठीक है, so these are as simple as possible, and these are present here also. ठीक है, एवरेजिंग सम, देन काउंट नंबर. काउंट नंबर क्या करता है, वो आपको नंबर्स बता देता है. सपोज मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे ये बाय डिफॉल्ट, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो नीचे हिंट Count. बार उसमें भी आता है से काउंट इज 13. लेकिन अगर आपको कहीं पे एरे की फॉर्म में यूज करना है या फिर लास्ट डाटा है आपका, देखिए बाय डिफॉल्ट तो वो सम भी बताता है, एवरेज भी बताता है, विच एवरीथिंग यू कैन सी बॉटम इट इज विजिबल. ठीक है, बट आपको अगर कहीं पे यूज करना है तो you use directly those formulas. I will be providing you with the list of formulas. ठीक है, more than 500 formulas I will be providing. आप लोग चाहें तो उसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. बस क्या करना है, एक सिंपल, मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें इक्वल टू करके आप सारे फॉर्मूलाज लगा लगा के देखिए. ठीक है, और यू विल ट्राई टू सॉल्व इट इफेक्टिवली. एक मैं और इफेक्टिव ट्रिक बता देता हूँ आज के लिए आपको. ठीक है, पहले टॉपिक्स देखता हूँ, हैज ऑल द टॉपिक्स बीन कवर्ड? हाँ, वी विल एरर हैंडलिंग मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जल्दी से, फिर उसके बाद विल टेक अ स्मॉल ट्रिक ऑल्सो. ठीक है, ओके. What is visible on the screen? Is my presentation visible? Yes, sir. Yes, sir. What is the heading? Error handling in formulas. Okay, great. So होता क्या है कि जब भी हम formulas लिखते हैं MS Excel में, तो there are different kind of errors that occurs in the MS Excel. ठीक है, होता क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े डाटा पे काम करते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि एक छोटा सा हैश आया तभी हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया ना. तो अलग अलग तरीके के क्या क्या एरर्स हो सकते हैं एमएस एक्सेल में, बेसिक. ठीक है, बेसिक क्या, एडवांस लेवल पे भी देर आर नॉट मोर देन 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स. मैंने 1 2 3 4 7 मैंने मेंशन भी किए हैं. ठीक है, तो बेसिकली इन एरर्स का मतलब क्या होता है, एंड हाउ वी कैन डू द ट्रबल शूटिंग एंड हेल्प इन करेक्टिंग दीज एरर्स. ठीक है, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल. जैसे ही कोई एरर आया, अगर आपको ये पता चल गया कि एरर किस वजह से आया, so you can immediately resolve those particular errors. So there are divide slash zero errors, value errors, reference error, name error, not applicable error, number error, null error. So these are will be taking one by one. So first of all, we have divide slash zero error. Very straightforward. This error occurs Sir, when a number. Huh. can we continue in next session? Is the time over? 7:55. 5 minutes is left. Okay, no issues. But can you can you study this error handling yourself? I'll provide you straightforward on your emails this particular Okay. error handling. Okay, sir. So what I'm expecting is if so, I'll just want that every one of you can, if you can open up your videos for at least 30 seconds, we'll have a view photograph for
My main intention is just that after the end of this particular sessions, when we'll complete this entire process, हमारा एक ही एम है कि आप में से कुछ लोगों को एटलीस्ट एक जीस्ट आ जाए कि मैं डाटा एनालिसिस कैसे कर सकता हूँ, ठीक है? सो दैट इज आवर ओनली एम. चलो ये तेरी गाड़ी है क्या हुआ? I'll just take. इसमें मैं कहा हूँ. ज्यादा हिलिए नहीं. Just one. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. If you anybody has any problem, you can text me on. Thank you, sir. Okay, sir. Thank Sir, if possible, sir, can please conduct the hybrid mode on Sunday, sir. Actually, that will be not that. ये कौन बिपिन बोल रहे हैं? Sir, Anish, sir. अनीश. एक्चुअली हाइब्रिड मोड क्या मैं आपको बताऊं, अभी भी लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास आई एम फ्री सिंस मॉर्निंग, ठीक है? फिर आप लोग फ्री हो जाएं, एंड मेनी ऑफ योर फ्रेंड दे हैव सम एसएससी क्लास, सम हैव स्पेनिश क्लासेस इन द इवनिंग. तो मेरे लिए टाइम मैनेज करना आप लोगों के लिए नहीं, मतलब मेरे अपने लिए भी फिर ऐसा हो जा रहा है कि बिकॉज अल्टीमेट एम केवल खत्म करना नहीं था वो, है ना? सैटरडे को हाइब्रिड मोड, संडे को हाइब्रिड मोड रख सकता हूं मैं अगर अवेलेबिलिटी लैब्स की होगी, लेकिन उसमें ये रहेगा कि जो लोग ऑनलाइन है उनके सेशंस के लिए किसी एक को कान पे ही लगा के बैठना पड़ेगा, क्योंकि वहां से अगर कोई क्वेरी आती है तो इफ आई गेट समवन हु कैन कोऑर्डिनेट, सो आई विल श्योरली अरेंज. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उल्टा ऑफलाइन, बिकॉज व्हेनेवर आई व्हेन आई वाज इन आईआईटी बीएचयू बनारस, सो दैट टाइम आई यूज्ड टू टेक the classes, like na whatsoever the classes that are going on, so we used to take these particular classes